श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती जी के चतुर्थ अध्याय श्री शक्रादि स्तुति का ध्यान एवं संगीतमय गान। कालाभ्राभं कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयीं। श्रीऋषिरुवाच शक्रादय सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तान्तुष्टुभो प्रणतिनम्रशिरोधरांसा वाग्विप्रस्थपुलकोद्गमचारुदेहा देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमुख्या तामम्बिकामखिल देवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्मविदधातु शुभानि सानः यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मारश्चन इव वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्म लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तान् त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चावेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वत्रयाखिलमिदं जगदंशभूत व्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन
सुमखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य तृप्तिहेतु उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षादिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्यजौषां निधान मुद्गीतरं यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वाता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृता दिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृतप्रतिष्ठा तत्साहसममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहितमात्करुषा तथापि वक्तं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रिकुटिकराल मुद्यच्छशाङ्कसदृशश्च वियन्न सद्य प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विद्यातमेतदधुनैव यदस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गा धन्यस्त एव निभृतात्मजभृत्यधारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना कर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा यत्याकृत प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता रसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थ
स्वास्थैस्निता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता हे विरहदैर्जगतु पैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मात्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिणोषि सहस्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि सहस्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो सुराणां यन्नागता विलयमन्सुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुरवृत्तवृत्तस्वमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यै वीर्यं च त्रिहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च सदृभयकार्यति हरिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूढनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्त मास्माकं मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन पाहि चापजानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तै राक्षसस्तथा
ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु तूपिता प्राप्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचु भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदा निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि वरोदेयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेता परमापद यच्चमात्यस्तवैरे भीष्मस्तोऽस्यत्यमलानने तस्य विस्तर्दिविभवैर्धनदारायि सम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेथा सर्वदाम्बिके भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तरहिता नृप इत्येतत् कथितं भूप शम्भुपासा यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहासा समुद्भूता यथाद्भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तस्त्रिस्मोऽवमायाख्यातं यथावत् कथयामि ते यथावत् कथयामि ते यथावत् कथयामि ते ॐ श्री
श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिकमन्वन्तरे देवी महात्म्य शक्रादिस्तुति अथवा श्रीदुर्गा सप्तशती चतुर्थोऽध्याय ध्यान एवं शक्रादिस्तुति सम्पूर्णम्।